Now everyone, we are doing something in relation to audit of education institutions, that is जिसमें आएगा स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसमें इधर से डायरेक्टली आंसर करते हैं। फर्स्ट, अगर आपको एग्जाम में जनरल वाला पॉइंट आ गया, सो यू हैव टू रिमेंबर एग्जामिनेशन ऑफ ट्रस्ट डीड और रेगुलेशंस और इन रिलेशन टू एनी लेजिस्लेचर मतलब एनी लॉ अंडर विच द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज सेट अप। सेकंड आएगा यहाँ पे द मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ द मैनेजिंग कमिटी इन रिलेशन टू वॉट एवर रेजोल्यूशंस दे हैव पास्ड। सो ऑन डे टू डे बेसिस वी विल चेक द मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ द मैनेजिंग कमिटी ऑफ द स्कूल, कॉलेज और द यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो जनरल में ये तो पॉइंट्स कवर होंगे यहाँ पे। तो पहला आएगा ट्रस्ट डीड और रेगुलेशन, सेकंड आएगा यहाँ पे मिनट्स ऑफ मीटिंग, दिस यू हैव टू रिमेंबर। अभी स्टूडेंट से जो फीस आएगा ना, उसके रिलेटेड यहाँ पे किस तरीके से वर्क होगा, पहले इमेजिन करना, यू टू जस्ट स्टार्ट इमेजिनिंग। Imagine a student fee register being there. उसमें names of the students, the amount of fees that we have charged, and whether that much, how much fees has been paid by them. उसका अपने columns बना के ready रखा है। इसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि whenever the students come and pay the amount, we will ensure that कि वो amount के सामने we are giving them something called as a receipt or receipt we'll issue, and what copy we have with ourselves is called as counterfoil. तो हम देखेंगे कि whenever the fees are received, whether we are issuing, the auditor will check whether receipts have been issued, whether counterfoils have been properly maintained by the school, college or the university, okay, जो educational institution है वो। The various columns will be made. Columns में we'll write कि कितना हमको पैसा एडवांस में मिल गया, कितना हमें पैसा यहाँ पे, कितना पैसा पेंडिंग है, कितना एरियर्स में है, कितना इरिकवरेबल है, जिसके लिए हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा, यहाँ पे राइट ऑफ करना पड़ेगा बाद में। आगे लिखा है यहाँ पे कि सर जो भी एडमिशन फीस आया, वेदर एडमिशन स्लिप्स हैव बीन गिवन टू द स्टूडेंट्स और नॉट। सर नेक्स्ट आएगा, अगर कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट रहेगा तो देन वेदर एनी फ्री स्टूडेंटशिप और कंसेशंस उसको देंगे हम यहाँ पे। तो वेदर फ्री स्टूडेंटशिप और कंसेशन इज गिवन और नॉट टू सच अ स्टूडेंट, अगर रहेगा तो वेदर रिकॉर्ड इज मेंटेन प्रॉपर्ली। नेक्स्ट आएगा सर वी विल confirm whether any fines or late payment of absence is there or not, or any have we charged any late fees ka charges to any student if the student has not paid the fees on time. And finally D se aayega yahan pe that dues of the hostel. Sir jo dues of the hostel hai, whether that is record from the student or not who is staying in the hostel. तो जो hostel dues है वो student ने अपने को पैसा दिया है या नहीं दिया, that is what we are checking here. Okay. In relation to your other receipts, so जो अदर टाइप का पैसा आ जाएगा फीस के अलावा, उसमें आ जाएगा आपका यहाँ पे सर रेंटल इनकम फ्रॉम लैंडेड प्रॉपर्टी विद द रेंट रोल। सो रेंटल इनकम मिला कि नहीं मिला। सर इनकम फ्रॉम एंडाउमेंट एंड लेगेसीज। एंडाउमेंट इज अगर एक पर्सन यहाँ पे अपने जो इनकम का हिस्सा है अगर स्कूल के साथ शेयर कर रहा है, कॉलेज के साथ शेयर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एंडाउमेंट। एक किसी पर्सन जो डेथ बेड पे जो अपना विल बना रहा है, उसमें वो विल पे लिखता है कि इतना परसेंटेज ऑफ माई शेयर विल गो टू द स्कूल और कॉलेज, दैट इज कॉल्ड लेगेसीज। सो विल सी वेदर एनी इनकम फ्रॉम दैट इज कमिंग और नॉट। नेक्स्ट एनी गवर्नमेंट grant या local authority grant मिल रहा है या नहीं मिल रहा, that is what we are checking in the next point. Okay, after that we are checking the expenditure part. expenditure part में पहले चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे, that is sir provident fund money जो स्टाफ के लिए साइड में रखा है कि नहीं रखा है। any donations that we have received, and for regarding that donation whether the money is used for that specific purpose or not. जैसे किसी ने हमें डोनेशन दे दिया यहाँ पे, let's say for building a ground in the school, स्कूल के अंदर एक अच्छा ग्राउंड बनाने के लिए, तो वो जो पैसा वो ग्राउंड में चला गया है कि नहीं चला गया, that is what we are checking here. So we'll also check in relation to any capital expenditure that is spent. जैसे स्कूल ने यहाँ पे बेंचेस खरीद लिए, या तो फिर यहाँ पे we can also say electronic board खरीद लिया स्टूडेंट को टीच करने के लिए in today's times, that will be capital expenditure. Sir, any establishment expenses or heavy expenditure that is there, that is, let's say, must have incurred at the beginning, but we are carrying it forward for many years, whether such expenditure is there or not, that is also what we will check. So regarding expenditure, the auditor will check all these points. Let's see the next matter that is in relation to assets and liabilities. So पहले तो आप liability side पकड़ लेना। liability side में हम देखेंगे कि if there is any caution money deposit that the school has with itself, that is what we are checking first. caution money है कि नहीं है यहाँ पे। caution money मतलब अगर जो हॉस्टल में रहते हैं यहाँ पे, उनसे अगर हम लोग ईयर के बिगिनिंग में कुछ पैसा पहले से ले लेते हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे caution money deposit, ताकि कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया एंड कुछ ब्रेकिंग हो गया यहाँ पे, तो we'll recover the money from the caution money deposit. Second, regarding the asset side, we will check whether there are old heavy arrears कि debtor से कुछ पैसा आना बाकी है, मतलब स्टूडेंट से कुछ पैसा आना बाकी है कि नहीं बाकी है, that is old heavy arrears कुछ है कि नहीं पास्ट के। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सर यहाँ पे कि अगर कोई हमने इन्वेस्टमेंट्स किया हो यहाँ पे, तो वो इन्वेस्टमेंट्स का जो रिटर्न जो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर वी विल आल्सो चेक द receipt and issue, जो receipt and issue of any provision foodstuff clothing equipment, provision foodstuff clothing equipment का कोई भी यहाँ पे receipt and issue हमने किया, उसको रिकॉर्ड बराबर मेंटेन किया या नहीं किया। एंड फाइनली एट द एंड ऑफ द ईयर we'll check the inventory in relation to any furniture provision, furniture provision, stationery, clothing equipment, इसका हम यहाँ पे ईयर एंड में इन्वेंट्री चेक करेंगे कि इन्वेंट्री बराबर है या नहीं है।
Simple. After that, we'll check the compliances. Compliance में उन्होंने दो चीज cover किया है यहाँ पे. That is basically your refund of taxes ki if the school is exempt from tax and if any TDS has been deducted by any third party with the school has dealt with, then the school should get the refund of that taxation amount. Okay? So that is your refund of taxes deducted that the school should get if the school is exempt. And finally, any other matter that the school has recorded in its records, whether everything is there in the annual statement or not. So whether all the ledgers and the statements are kept properly, and the annual statement of accounts, the auditor will verify. Simple यहाँ पे है. That completes this part. That is in relation to audit of schools here. ठीक है? Now I'll take you back to the main chart where you have the audit of hospitals. So let's do this from here. आ जाओ यहाँ पे. Now audit of hospitals में what all have they covered? पहले we'll go with the story and we'll immediately to the point. The story I think you remember also. So let's do it one by one. पहले sir, the tea seller has given us the authorization and sanction. If you remember the story, you'll get it very fast. Authorization and sanction. Now, after that, the four friends, they call their relatives and from the relatives, they collect donations and legacies. इसके बाद एक पॉइंट आता है यहाँ पे कि हम जाते हैं यहाँ पे एक फ्रेंड को बुरा लगता है तो एक फ्रेंड क्या करता है वो जाता है और जाके इन्वेंट्री लेके आता है. इन्वेंट्री मतलब वही जो अपना स्टॉक स्टोर विच आई टोल्ड इन द क्लास एज बैंडेड डेटॉल और ये सब लेके आता है कि अपना हॉस्पिटल रन कर रहे हैं तो कुछ इन्वेंट्री तो होना चाहिए अपने पास. Then that one person comes with his hand on his chest and he is not able to breathe properly. At that time, another friend is sitting and remember he has a knife in his hand. So you will understand that he now goes to do the operation with the used knife. तो used knife को अपने यहाँ पे depreciation करके लिया था story के अंदर. Okay. Then after that, the patient is very happy that the operation went on properly and the hospital did not even fill the register of patients. So for this, you'll remember the point called register of patients. Next day, वो जो आदमी जो operation करने के लिए आया था, that he turns out to be a politician, so he gives us a grant, and his supporters also give us money. So that is cash collection. जैसे cash collection हमें मिल जाता है यहाँ पे. Then after that, you have the next point, and then the next point is in relation to सर वो पैसे के साथ अभी करना क्या है उसके लिए हम यहाँ पे मैनेजमेंट कमेटी बुलाता है. सो यू विल रिमेंबर हियर यू विल नॉट रिमेंबर मैनेजमेंट कमिटी बट यू विल रिमेंबर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन एंड सर्टिफिकेट. वी कम अप विद द बजट्स, we keep all the internal procedures, that is internal checks in place, and after that we maintain two register. One is called subscription register, one is called investment register. Because we are assuming that the hospital has done some investments, the hospital will also check the income from investments. So like that we have done the points in a flow. Clear एकदम ये? ठीक है. That is what we have done in this part. That is in relation to your audit of hospitals. ठीक है. इसके बाद मैं एक और कवर कर रहा हूँ यहाँ पे, that is called audit of hotels. And for audit of hotels, I'll again take you to the module only because in the module they have given in a much better manner. एक सेकंड रुकना यहाँ पे. So we are now doing something called as audit of hotels. Just a second. आ जाओ यहाँ पे audit of hotels में. ठीक है. Now audit of hotels we had done it in a story method. ठीक है. तो story method से अपन ने किया था and we'll do this one by one so that it is very very easy for you to remember. ठीक है. तो यहाँ पे पहले अपन ने लिया था ये फर्स्ट पॉइंट इन आर स्टोरी वी टुक इट एज रूम सेल्स एंड हॉल बुकिंग्स को अपन ने पॉइंट नंबर 1 ले लिया था. नाउ इसमें आई विल टेल द पॉइंट्स एंड यू हैव टू सर्च फॉर इट एंड यू हैव टू क्विकली अंडरलाइन. ठीक है. तो पहले तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे कि रूम सेल्स एंड हॉल बुकिंग्स के रिलेटेड whenever you go and speak to the hotel. तो जब भी आप होटल से आके बात करोगे यहाँ पे, so you will first ask them कि रूम का चार्ज कितना है यहाँ पे. So the charge of the room sales will be as per the standard room rate. ठीक है. And standard room rate के हिसाब से ही उन लोग को बिल बनाना चाहिए यहाँ पे. The bill should be made as per the standard room rate. Even the hotel, when you are doing the inquiry at that time, the person at the reception, he also counter inquires with you कि कितने लोग होटल में रहेंगे. Based on that, he will tell you the rate that he is going to charge. So the correct number of guests is very very important. After you have answered, suddenly वहाँ पे दो चीज होता है कि you see that वो reception के पीछे एक आदमी यहाँ पे सोया हुआ है. That person is a night auditor, and night auditor is required to maintain the records कि कोई भी रूम में नाइट में कितने लोग ठहरे थे होटल में. That record should be very very clear because that is the main source of revenue. After that you will see the housekeeper's daily report कि housekeeper ने यहाँ पे कौन से rooms clean किए, यहाँ पे उसका daily report बनेगा. You can check with that also to see कि कौन से rooms यहाँ पे occupied थे. After that we had done a small point कि यहाँ पे you just ask the hotel owner कि how many rooms are occupied. He says कि sir we are 80% occupied or 70% occupied. That is occupancy in progress. And also from one of the areas in the hotel that you can hear music sound. In the class we had told you this sound करके से आवाज आ रहा है यहाँ पे. तो you ask them अरे क्या चल रहा है यहाँ पे. So he said sir एक बर्थडे पार्टी चल रही है यहाँ पे and they have booked that hall. So इसके लिए वो म्यूजिक का थोड़ा साउंड आ रहा है यहाँ पे. Okay, that is in relation to the room sales and hall bookings.
Now, a pre-point to this in relation to this was something in relation to something called as your fixed asset. So when you enter the hotel at that time, you saw the big what do you call hotel building. So that is a fixed asset. And when you're walking toward the reception, wo trolley mein you can see the gold and silver cutlery which is going. That is called quasi fixed assets. ठीक है? And after that you see कि यहाँ पे जो होटल है उसमें the pillars which are there उसमें पपड़ी उपड़ी गिर रही है यहाँ पे. So you think in your mind maybe the hotel requires some minor renovation and redecoration. ठीक है? Again, that point you will be able to find. Okay, that covers all this part. That is in relation to the fixed asset. Then you go and inquire about the room sales. Okay, so that was the precursor. Fixed asset is the precursor, and then this is the main point of regarding the room sales and hall bookings. Now after that we go to the next point, and the next point is what, sir, in relation to we one laborer, one person at the hotel, he helps us to carry all our luggage. So when he's taking the luggage to our room, we ask him how much wage he gets and whether he's paid adequately or not. All these things we ask, and then he also tells very confidently, yes, yes, sir. In our hotel, proper controls are maintained by the management, and everything is there proper regarding the casual labor part. Now you ask the same laborer कि ये same जो casual labor जो hotel में काम कर रहा है, you ask that same person कि if I'm very hungry, where should I go and eat? So he suggests you to go to the restaurant, and he shows you the restaurant where you can go and eat. अभी restaurant में जब आप जाते हो, there you see that food and beverage inventory is kept, and lot of movements and transfer of inventory is happening from here to there. Now you are seated at your seat. There you also see that there is a door in which वहाँ पे लिखा है कि no entry यहाँ पे है. So you see that कि वो entry वहाँ पे allowed नहीं है, but you still are curious कि वो उसके पीछे क्या बन रहा है यहाँ पे. Now, I had told you the setting in the classroom की किस तरीके से है. Where you are seated, no, where you are seated, उसके लेफ्ट हैंड साइड में वहाँ पे नो एंट्री वाला डोर है, एंड राइट हैंड साइड में देयर इज अ ग्लास, और ग्लास के पीछे यू कैन सी द शेफ इज एक्चुअली कुकिंग द फूड. सो इट्स एन ओपन किचन, यू आर एबल टू सी व्हाट दे आर कुकिंग. ओके, सो नाउ यू आर वंडरिंग अभी करना क्या है, एंड यू वांट टू सी कि वो डोर के पीछे क्या है. तो एट दैट टाइम सडनली अ पर्सन कम्स एंड ही टेक्स योर ऑर्डर. ये पूछता है कि आपको क्या खाना है, तो आप बोलते हो आपका ऑर्डर देते हो यहाँ पे, एंड दैट पर्सन हैज नाउ टेकन योर ऑर्डर. So when that order is basically all the documentation should be there in place. Documentation is accurately processed. After that, what happens is this: the manager, he is roaming with the key like this. So the uh, department manager will have the custody of the key, and he walks past by you. What you do is you suddenly go and open that no entry wala door, and you see, put your head inside, and you see that there is an employee who's doing pilferage. Pilferage मतलब छोटी चोरी कर रहा है यहाँ पे. और अभी वो एम्प्लॉय यहाँ पे छोटी चोरी कर रहा है. व्हाट यू आस्क इज, यू आस्क द एम्प्लॉय कि यू डोंट आस्क, बेसिकली यू आर ऑब्जर्विंग कि एम्प्लॉय क्या कर रहा है, एंड सडनली द होटल मैनेजर आल्सो कम्स, एंड नाउ वी आर एंटरिंग दिस इंटरनल कंट्रोल्स पार्ट. सो रिमेंबर देयर यू सी पिल्फरिंग एज अ प्रॉब्लम, एंड द होटल मैनेजर आल्सो कम्स, एंड द होटल मैनेजर आस्क्स यू कि ये क्या देख रहे हो आप यहाँ पे, एंड ही आल्सो सीज हिज एम्प्लॉय स्टीलिंग समथिंग. तो ही मेक्स अ बिग नॉइज, and when he makes that loud noise, what happens is the employee gets scared और वो सब ड्रॉप कर देता है यहाँ पे whatever he was stealing. और वो जो ड्रॉप करता है यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे that is called as minimize the leakage. Now what happens is you go and sit at your place and you're eating your food. And when you're eating your food, you see that the food has been prepared and they are working as per the KOT system, where they look at the order, they cook the food, and they put that order in a bowl. At the end of the day, they check कि वो bowl में अपन ने क्या क्या orders रखे थे, and whether it is matching with the revenue that we have earned. Simple है यहाँ पे. तो इसको हम बोलते हैं KOT, kitchen order ticket system. And finally the last point will be in relation to this कि जो फूड अभी आ गया, फूड हमने खा लिया, यहाँ पे खाने के बाद वी विल पे दी बिल अलोंग विद द टैक्सेस दैट आर देयर. इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट आएगा यहाँ पे, दैट इज इन रिलेशन टू ट्रैवल एजेंट एंड शॉप्स. रिमेंबर बहुत सारे होटल्स में यहाँ पे एक ट्रैवल डेस्क होता है, जहाँ पे एक ट्रैवल एजेंट वहाँ पे होटल के साथ टाई अप करता है, एंड दे आर हैविंग अ ट्रैवल डेस्क का बूथ. जब भी होटल के कोई गेस्ट, if some guests from the hotel are using the travel agent services, in that case the hotel will pay, the travel agent will pay the hotel some kind of commission because he's getting the customers because of the hotel. Okay, the travel agent's business can also be very well spread out. So if from other cities the travel agent is able to convince the guests that please come and stay in this hotel where you're when you're in in this city. Example, in Delhi the travel agent is having an office and he has good connections in Kolkata. So the guests who are traveling from Kolkata, he's able to convince them that whenever you come to Delhi, please stay in this hotel. So in this case, you'll understand the hotel is getting the guests based on the travel agent's recommendation. In that case, the hotel will pay some kind of commission to the travel agent. Simple. So that is basically how it works. That completes our this point in relation to audit of hotels. It's a long story, but you have to then again rerun the story and see whether how the points are connected to it. Simple matter है ये, ठीक है? That completes our this matter here.
let's go further and go to the other chapters. I think regarding this chapter, I have taught all the areas. So I think we have made 3 videos now. And in total, revision has 4 videos. First video was in relation to the audit of government, that is, government audit is first. Second video will have local bodies, NGO, hire, purchase, and leasing. Video number 3 will have cinema, club, and charitable trust. And video number 4 will have education institution, hospitals, and hotels. So these areas we have covered properly. What I'm letting you all to do by yourself is in relation to 2 parts, that is cooperative society, because I've already given a summary chart, and also regarding the audit of partnership firms and LLP. Again, for that summary notes means shortcuts have already been shared with you all. So you can just go through that and it will be easier for you. Okay.